के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा when Kajol herself is here. Ma'am, kindly do the honors. Okay, so everybody's ready, right? Okay. सबके 12 बज गए ना? Okay, cool. Okay, so Tanvi, are you ready? Sorry, Shubhangi, are you ready? Tanvi is ready. Come on out. In 3, in 2, in 1, ladies and gentlemen, come on, make some noise for. This is what you call a magical debut, ladies and gentlemen. Ginna mat. That's a lot of people. That's a lot of people. Yeah. So, how are you feeling? Amazing, excited, and you're standing next to me. I'm feeling out of the world. Anupam sir's there, so I'm feeling better. Dulari ji, family. My family, I'm sure they're somewhere there. And my friends and my team and my fellow actors from Actor Prepares. It feels amazing. And I was just seeing myself here, and I was like, damn, I made it. How does it feel to see yourself on screen for the first time? I was in disbelief at first, and I was like, whenever I used to come to watch a movie, I used to just shut my eyes before any movie used to start, and I used to just be like, एक दिन मेरा चेहरा होगा, एक दिन ऐसा मैं इंट्रोड्यूसिंग शुभांगी जरूर देखूंगी. बिल्कुल आपका नंबर आ गया. Thank you God, and thanks to Anupam sir. Okay. Yes, Thank you so much. and Actor Prepares. Of course, Anupam sir, please, आप भी हमारे को यहाँ join कीजिए. जोरदार तालियां अनुपम sir के लिए, of course, for this effort. जी सर. क्वेश्चंस बड़े सारे हैं. काजोल मैम, एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे. आई डोंट नो ये वाला कितनों ने पूछा कि ये एस्पायरिंग एक्टर्स जो यहाँ पे बैठे हैं इतने सारे, उनको और ऑफ कोर्स तन्वी को एक टिप या कुछ एक एडवाइस, बिकॉज यू सीन द इंडस्ट्री, जिस तरह से मुझे नहीं लगता इस ऊंचाई पे कोई पहुंचा है. Tip, there's no tip. There's really no tip. I think what Kajol also wants to say is that be yourself, because she has been herself always, and also work hard. There is no alternate to hard work and honesty. Right. Being real, I think, sir, is the key, because this goes for the both of you. Because ये अगर 20 साल बाद ऐसी होंगी तो वो उनकी सफलता होगी और उपलब्धि होगी. I agree. That's what you said. That should be. Don't change. Never. Don't change, because you will lose on everything. Now, before we go further, I'll have some very important people to call on stage, and because they have to go, I would like to request Joint Secretary INB Pitul Kumar ji to come on stage, because NFDC is our partners. Pitul ji, thank you so much for being our partner. Thank you so much. Pitul sir, एक क्विक क्वेश्चन सर जो बनता ही है यहाँ पे, बिकॉज NFDC वो बड़ा एक ट्रस्टवर्दी नाम है, और जब वो किसी चीज को बैक करता है, एंड स्पेशली अ फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द जेंटलमैन हियर, व्हाट मेड यू से दैट इसके साथ तो हमें चलना ही है? So, NFDC हमेशा अपनी उन फिल्मों के लिए जाना जाता है जो कि न सिर्फ अपने आप में सक्सेसफुल फिल्में थी, बट वो फिल्में एक दौर बना के मतलब इस इंडियन सिनेमा को उन्होंने आगे बढ़ाया, स्पेशली इन 1970s and 80s का दशक है ना. उसके बाद भी NFDC was investing in films, but we found that NFDC की कोई बहुत remarkable pictures नहीं आई जिसमें NFDC बहुत forefront पे आके उसने किसी ऐसी फिल्म में इन्वेस्ट किया जो एक किसी रिमार्केबल इथॉस को लेके आगे बढ़े, और जो स्टोरी लाइनअप था तन्वी का, हमारे सारे स्क्रिप्ट रीडर्स जो कि जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने इसको इतने सारे मार्क्स दिए कि दैट वी कुड नॉट रेजिस्ट, एंड आई थिंक 135 एप्लीकेशंस थी जिसमें वी वर सिलेक्टिंग one of them, so because we have to see a fair transparent status, but script तो खाली एक पार्ट थी, and अनुपम जी का नाम जुड़ना उसके साथ, और we were sure कि अनुपम जी जैसा ही हर पहलू होगा, and कीरवानी साहब का नाम जुड़ना, कृति महेश जी का नाम जुड़ना, रसूल पुकेटी साहब का नाम जुड़ना, and our Tanvi here, I think she has
she must have done exceedingly well in acting, because of which she has become one of the lead actor for this Tanvi. So ये स्टोरी तो थी ही, और ये सब रिमार्केबल लोग जो इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि अपने वर्क को एक वर्शिप की तरह लेते हैं, एंड दे आर ऑल माइस्ट्रोज ऑफ देयर फील्ड. एंड आई एम श्योर दैट द लुक्स विच यू सी, from the way the direction is done, from the way the music has come out, from the way each shot has been done, from the way the acting is there, I think you all understand it better that how lovely this film will come out to be. I really, really want that this will be a successful and a very, very remarkable film. I'm sure the audience will love it in due course. And I'll also thank on behalf of our producer for Kajol ji to come here and be a part of this inaugural, because this film is about the gravitas, about the story, which is so remarkably putting forth patriotism in the front line, and also the story which is, I think, very, very close to Anupam ji, and with a person like Kajol, who's a person of gravitas in this film industry. So I really thank her also to come here and support this. Thank you. Thank you, Pruthul. एक मिनट रुक जाइए. I want to call a gentleman here who gave the soul to this film with his music, and that is Mr. M.M. Keeravani sir, the Oscar winner. Absolutely, sir. MM sir के साथ, thank you sir, thank you for coming. MM sir के साथ मैंने फिल्म का म्यूजिक शूटिंग होने से 1 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया था. मतलब जब हमने बहुत सारे सेशंस का साथ किए हैं, और मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सोल आई है इनके साथ वक्त गुजार के. इनका म्यूज़िक तो कमाल का है ही, जब आप लोग सुनेंगे. और इट्स वंडरफुल टू शेयर स्टेज विद एन ऑस्कर विनर, विद अमेज इंडियाज लीडिंग, I will not say leading, India's amazing person and music director. Thank you, sir. This music that you are hearing is the theme of Tanvi the Great. Thank you for those wonderful afternoons, evenings. Thank you for those trying to find out the soul, sorry to pester you. नहीं सर, मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, but I used to pester him. नहीं सर, यहाँ ऐसा कुछ हो सकता, नहीं टंग टंग ऐसा कुछ. You used to smile at me with this beautiful infectious smile. Thank you for doing this, sir, for me. It's pretty soothing, calming here, sir. Sir, what would you like to say about this collaboration here? सबको नमस्कार है. You came to know the answer for who is Tanvi the Great, but instead I am giving a different answer for who is Anupam Kher the Great. Mr. Anupam Kher, for the world and for you, he's a legend, but for me, he's family. And I thank my friends Neeraj Pandey and Sheetal Bhatia for extending my family with their presence and introducing me this great person to me. And since this day it belongs to Tanvi, East or West, Tanvi is the best. Just like a dialogue in the movie. All the best to you, Tanvi. And Kajol ji, big fan, and thank you for gracing this Likewise. event. Thank you very much. And music के बारे में मैं कुछ correct me if I'm wrong in Hindi, sir. कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ. अच्छा sir. क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? Because you have to listen the music. हिंदी में जवाब दीजिए. You have to pass the comments or what. बहुत अच्छा है इनका म्यूजिक. सुपर डुपर हिट म्यूजिक है और सोलफुल म्यूजिक है. आपने और जो ये कहना चाहते हैं इन्होंने अपने म्यूजिक में कहा है, तो जरूर सुनिए ताकि आप सुन सके कि वो क्या कहना चाहते हैं. वाह, थैंक यू. मेरा काम बहुत आसान हो गया, सर. सर पृथुल जी और सर को हमें भेजना होगा. राइट, आपको 5 मिनट रुकना होगा. So we'll do a quick picture with this team abhi, Yes. and then I'll invite the HODs on आप stage. इस तरफ आ जाइए. Anupam sir is pretty particular कि मेरी जो भी HODs की टीम है Celtic में, वो पहले यहाँ पर आए, because that's how it has been, because he's introduced the technical team first, and उसके बाद And now I'd like to request the HODs of Tanvi the Great, अलग-अलग departments के, कि kindly come up for a quick photo pic. Rohit, he did the costumes of the film, amazing. Kruti ma'am, Kruti is
the magician of choreography. Where is Kruti? Shipra did the styling. My writers are here, and Ankur ji, Abhishek ji, इन्होंने बहुत कमाल का काम लिखा है इसमें. My editor, please आइए सर. There are a lot of people here. हमारे रॉड्रिक सर आए हैं सर, and please sir, आइए ना, आप भी आइए ना सर please. And yes, this is the rod man himself. Please come on this side. Joshua is our post-production producer, and our colorist, Andy, and the man behind this whole thing, who I'll say the backbone of this film, is Herman D'Souza. The co-producers of this film is Sikandar and my brother Raju Kher. They are the co-producers. Please come on stage. Raju kahan hai? Raju आइए. There's another actor who was my physiotherapist in the film, not in the film, otherwise in life. मेरी टांग में कुछ प्रॉब्लम थी तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे, कोकिला बहन के हेड ऑफ द फिजियोथेरेपी. सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. तो मेरे ऐसे टांग ठीक करते करते मैंने कहा तो आपकी ख्वाहिश क्या है? ये 8-10 साल पहले की बात है. उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है, मेरे पिताजी मुझे एक्टर नहीं बनने देते, मैं एक फिल्म में रोल करना चाहता हूँ. When I decided to shoot this film, I called him up. He's here, Ashish. He is Indian. He has been Indian team's physiotherapist. Currently, he is Lucknow team's physiotherapist. But he's done a great job. वो बात अलग है कि शूटिंग के दौरान इनको चीज़ें नहीं मिलती थी सीटी की. But thank you. This is the team which has created Tanvi the Great. It's a great team. Everybody के सामने नाम हम great लगाते थे. Thank you very much. I'll let go of sir. You have to go. But lunch नहीं करेंगे? करेंगे ना आप? नहीं सर, लंच करके जाइए. नहीं मीठा मिल गया सर, कह रहे मीठा मिल गया. ओके, बट सिट ना. सॉरी,